नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हेडलाइंस ऑफ द डे। इस वीडियो में हमारा फोकस होगा इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर। बिफोर वी स्टार्ट आई वुड से वेरी ऑफन अ चेंज ऑफ सेल्फ इज नीडेड मोर देन अ चेंज ऑफ सीन। तो चलिए फिर आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। सर्विसेज सेक्टर ग्रोथ एट 6 मंथ लो इन सितंबर एज इन्फ्लेशन रिमेन्स कंसर्न। ये अवेलेबल है पेज नंबर 3 पे और ये रिलेटेड है इकोनॉमी सेक्शन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स and its recent finding. तो according to index, growth in India's service industry eased to 6 month low in September, led by a cooling in demand amid high inflation. अगर हम index की बात करें दोस्तों, तो it is released at the beginning of every month and it is an indicator of overall health of the economy, right? Our next important headline is India abstains at UN on vote for debate on human rights in China's Xinjiang, right? ये अवेलेबल है पेज नंबर 3 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट इंडियाज रिस्पॉन्स ऑन द ह्यूमन राइट सिचुएशन इन सिंजांग रीजन, राइट? तो दोस्तों न्यूज में क्यों है अभी ये? क्योंकि रिसेंटली इंडिया एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग ऑन अ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन इन यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑन होल्डिंग अ डिबेट ऑन ह्यूमन राइट सिचुएशन इन चाइनाज सिंजांग रीजन। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज अप अहेड राइस इनसिक्योरिटी। ये अवेलेबल पेज नंबर 12 पे और ये रिलेटेड है पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड राइस मार्केट, इंडियाज राइस यील्ड, रिपरकशंस ऑफ द मूव टू कर्ब राइस एक्सपोर्ट्स। दोस्तों बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है सारे पॉइंट्स को। अगर हम ओवरव्यू देखें तो इंडिया एक्सपोर्ट्स राइस टू मोर देन 130 कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूटिंग अराउंड 40% ऑफ द ग्लोबल राइस ट्रेड, राइट? और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज नो रेस्पाइट। ये अवेलेबल है पेज नंबर 12 पे और ये रिलेटेड है पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट ओपेक प्लस डिसीजन टू कट ऑयल सप्लाईज एंड इंप्लीकेशंस ऑफ द मूव। तो दोस्तों न्यूज में क्यों है अभी? क्योंकि रिसेंटली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज एंड इट्स एलाइज अनाउंस देयर डिसीजन to slash crude oil output by 2 million barrels per day ahead of the peak winter months. अब इसका implications क्या होगी? It will tighten the global oil market and such sharp supply cut driven by desire to maintain prices will offset the release of strategic oil reserves that was designed to bring down the price of oil and help consumers at the time when inflation has surged across the world. Our next important headline is ECI's overreach। ये अवेलेबल है पेज नंबर 13 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। In this article, we have to know about the highlights of the Election Commission of India's letter proposing mandatory disclosure of the financial implications of the promises made in the manifestos by political parties. What is the rationale behind the move and way ahead? What is the rationale behind the move की बात करें दोस्तों तो Election Commission of India aims to enable healthy debate on financial implications and fiscal sustainability of promises made by the political parties, and it is stated that this is necessary for facilitating the conduct of free and fair elections, right? Our next important headline is Any Arnav, memorist of personal, political and the universal। ये अवेलेबल पेज नंबर 17 पे और ये रिलेटेड है मिसलेनियस सेक्शन से। In this article we have to know about Nobel Prize in Literature and works of recent winner। तो दोस्तों अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि recently French writer Annie Ernaux has been announced as the winner of 2022 Nobel Prize in Literature, right? और next important headline is सुपर ऐप। ये अवेलेबल है पेज नंबर 17 पे और ये रिलेटेड है पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट सुपर एप्स। तो दोस्तों क्या होती हैं सुपर एप्स? दे आर प्लेटफॉर्म्स डेवलप्ड बाय कंपनी ऑफरिंग वेरियस सर्विसेज अंडर वन अम्ब्रेला, राइट? Our next and last important headline is World Bank cuts financial year 23 growth forecast by 100 basis points to 6.5%। ये अवेलेबल है पेज नंबर 19 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट वर्ल्ड बैंक्स recent forecast for Indian economy। तो दोस्तों recently World Bank trimmed India's growth forecast for 2022-23 by 100 basis points, projecting that the Indian economy will grow at 6.5% compared to its earlier estimate of 7.5% released in June 2022, right? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। Thanks for listening. For regular updates, you can follow us on various social media platforms.